आप एसएचओ को पूछें कि आपने ये झूठी एफआईआर क्यों काटी है किसी गरीब आदमी की, और नहीं जी तुसी ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਈ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਤੂੰ? और जो तुसी पता नहीं किस दुनिया च रहंदे हो, मैं तो उत्ते देने ने, अद्धे मैं उत्ते देने ने। डीएसपी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। right up to the IGP, for God's sake, I've seen all this happening, Shahid, and the DC is like a Lord Sahab in a district. PM or the CM is talking absolute nonsense, and the bureaucrats sitting there, federal secretaries, provincial secretaries, they take it as the absolute gospel and they start implementing it. And when you leave the room and you ask them, यार ये तो बिल्कुल गलत है, होगा ही नहीं, कहते हमें भी पता कि नहीं होगा, लेकिन अब साहब का हुक्म आ गया। This system has to change. 1 अरब रुपया आप एक एमएनए को देते हैं 1 साल का, या एक एमपीए को देते हैं 1 साल का, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे जो काम वहाँ डेवलपमेंट के होते हैं वो खुद आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वो अपने ठेकेदार जो हैं जिनसे वो काम करवाता है उनके साथ बंद कमरे में बैठ के डील करता है कि इतने % कमीशन मैं लूंगा। शाहिद जस्ट अ सेकंड, ऐसे लोग हैं नहीं, ये ज्यादातर एमपीएस और एमएनएस इसी तरह हैं, आपकी तरह के या इनकी तरह के। आई वाउच फॉर माई सेल्फ, मेरी तरह के चंद लोग होंगे। There's so much corruption up and down the line, Shahid. So much corruption that every person is a stakeholder, right up and down the line. You know, I have seen in my last 5 years as an independent member of parliament, postings and transfers being sold for millions of rupees. And then I've seen those officials really kind of खाल उधेड़ लेते हैं गरीब की फिर, in order to pay for their postings and transfers. And then, you know, and they're so blatant about it. You ask somebody, आप एसएचओ को पूछें कि आपने ये झूठी एफआईआर क्यों काटी है किसी गरीब आदमी की, और नहीं जी तुसी ਉਹਨੂੰ ਕਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। अच्छा, so if you are standing there with a stick in your hand, then you ensure कि उस गरीब आदमी की खाल नहीं उधेड़ेंगे। And if you look the other way, Shahid, they'll get 50,000 rupees off the poor man and kharij karo de. And the minute you say to the SHO, भैया इस गरीब कोलों पैसे क्यों लेने तू, और जो तुसी पता नहीं किस दुनिया च रहंदे हो, मैं तो उत्ते देने ने, अद्धे मैं उत्ते देने ने। डीएसपी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜੀ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। right up to the IGP, for God's sake, I've seen all this happening, Shahid, and the DC is like a Lord Sahab in a district. How are you going to reform this system? Local government. One answer, one word answer. I mean, seriously. Okay, what's the one word answer? I mean, local government is the only answer to that. An empowered local government, elected empowered local government. There is no reason why a federal government employee or a provincial government employee should be doing these things. This is, the service providing level of the government, the suffering providing part of the government is local governments, which should provide health, education, etc., etc. That's now become, you know, a tool for political influence. So you have, first you used to have, before the concurrent list was disbanded, a federation controlled from Islamabad, and now you have 4 power centers in Karachi, Lahore, Islamabad, and Karachi, Lahore, Quetta, and Peshawar. And unless and until you take power to the local level, so that thanedar, SHO, वगैरह, their bosses are the mayors of those small towns and tehsils and districts, and they have to go in elections. How many times have we heard this before? I'm sorry to interrupt you. You were part of a government that did away with a perfectly sound local bodies government system that General Musharraf had set up. That's the one good thing he did. You people came to power and then you did away with it. What's the explanation for that? You're talking about empowering people at the local level. Absolutely, everywhere in the world, facilities and services are provided by people at the grassroots, in the local governments and by local authorities. Not in Pakistan. Even in India, you have a Panchayat Raj, but you have a functional local body system. In the 2000s, in the first decade, it works very well. Zilla Nazims, district Nazims, etc. सब आप लोग आए हुकूमत में, आपने उसकी छुट्टी करा दी, फिर आप कह रहे हैं कि हम बनाएंगे आगे। जवाब दें सर, आप जवाब दें जी।
No. You need a bigger fix. Let's talk about the Musharraf's local body system. You are creating fiefdoms in this country. People are leaving their MNA elections, their MP elections to become Nazims. Why? Because of corruption. The authority and the corruption. People were having one guy, one of the family as a politician, the other one as a Nazim, the third one as an officer in the same district. सर इस बार 4 खोकर PMLN से और 2 खोकर PTI से लाहौर से इलेक्शन लड़ तो और कोई जीते ना जीते खोकर जीत जाएंगे लाहौर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें, you cannot tinker with the system anymore. You need a completely new system. I'm a big proponent of new provinces. These provinces are not manageable. They have failed. But we have a lot of sensitivities about provinces. Why? Can somebody explain that to me? This system is not working. Look, Mukhtar loves to talk about local bodies. There's a natural conflict between the MNA, MPA and the local body guy. Because it's a politics of patronage. It's the same resources. Either I will use them or he will use them. Right, Shahid? You know, you've been Prime Minister. Sorry to interrupt you. Who dispenses this patronage? It is a policy of every government, whether it's federal or it's provincial, to dole out development contracts to their MNAs and MPAs. What business, I ask you, do MNAs and MPAs have in deciding and doling out development contracts for their constituencies? They should be legislating. Can I just say this? और हर गवर्नमेंट ये करती है। देखें, the fact is जुगनू कि अगर आप अपने इलाके के फार्मर्स के लिए इंटरसीड कर रही थी SHO से, दैट मीन्स कि इलेक्टेड लोगों को ज़्यादा फिक्र होती है क्योंकि उनके वोट्स उनको चाहिए होते हैं। ये मेरे ख्याल से गलती थी परवेज़ मुशर्रफ का सिस्टम ख़त्म करने के लिए। एक सिस्टम में अगर कोई ख़राबी थी तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर कर सकते थे, लेकिन उसको कम्प्लीटली डिसअपॉइंट कर और वापस से वही जो पावर MNAs और MPAs को दे दिया है, ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है, वो गलती थी। क्योंकि वो पावर आपने उस सिस्टम के लिए दूसरा सिस्टम नहीं लेके आया, आपने तो पावर जम कर लिया अपने पावर्स में। तो दिस इज़ अ मिस्टेक, मेरे ख्याल से 100% मिस्टेक कि आप लोकल बॉडीज़ को आपने ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर अगर आज, and I will repeat these statistics, I always do what I need to, अगर 78% 10 साल के बच्चे 2 जुमले किसी ज़बान में नहीं पढ़ सकते और अगर 58% बच्चे वेस्टेड या स्टंटेड हैं, तो जाहिर है कि हमारी सिमत सही नहीं है। जाहिर है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कोई जाहिल मुल्क जो है वो अमीर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता पाकिस्तान की पूरी कौम जाहिल रहे और हम पाकिस्तान तरक्की हो जाए, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने तालीम देनी है और अगर आपने सेहत देनी है तो आपको लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा। कोई सिस्टम हो, इम्परफेक्ट सिस्टम ही होगा, ह्यूमन बना हुआ सिस्टम इम्परफेक्ट ही होगा, लेकिन किसी सिस्टम से स्टार्ट करना होगा और पावर को नीचे तक डिवॉल्व करना होगा। अगर आप पावर्स को नीचे नहीं डिवॉल्व करेंगे तो फिर यही होगा जो आप कह रही हैं कि जो MNA है, MPA, वो अपनी स्कीम्स करता है, जो भी उसके अंदर जो स्कीम्स करता है। और इसमें आखिरी बता दूं कि बलूचिस्तान में 2013 के बाद 3000 स्कूलें बनी हैं, 2700 स्कूलें उसमें खाली पड़ी हुई हैं। वो MPA और MNA की स्कीमों में स्कूलें बनी हैं। 3000 स्कूलों में से 2700 स्कूलें खाली पड़ी हैं इस मुल्क में, जहां पे 2 करोड़ 80 लाख बच्चा, 2 में से 1 बच्चा स्कूल में नहीं है। अच्छा, तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है ना शाहिद? आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप लोग जब असेंबली में बैठते हैं, जब हुकूमतों का हिस्सा होते हैं, तो आप क्यों नहीं इसके बारे में कुछ बात करते कि नहीं, इनको फंडिंग नहीं होनी चाहिए, MNAs और MPAs को फंड्स नहीं देने चाहिए? वो एक कलेक्टिव सोच है कि हमें भी सियासत करनी है, पैट्रनेज करनी है, ये आप मत दें। और 30% उसके ऊपर कमीशन खानी है ताकि हम इलेक्शन के ऊपर पैसे लगाएं और फिर हम और पैसे बनाएं। आप उसको खत्म कर दें और ये खत्म जो होगा, जिस तरह हम प्राइम मिनिस्टर, वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नॉट अ monarch. He does not have absolute powers. I have attended meetings for years and decades now where the PM or the CM is talking absolute nonsense. And the bureaucrats sitting there, federal secretaries, provincial secretaries, they take it as the absolute gospel and they start implementing it. And when you leave the room and you ask them, यार ये तो बिल्कुल गलत है, होगा ही नहीं, कहते हमें भी पता कि नहीं होगा, लेकिन अब साहब का हुक्म आ गया। This system has to change. ये आप तो MNA MPA बिल्कुल मत दें, फंड मत दें, फिर किसी को मत दें। Then have a system of spending
of developing the province. It can't be that Jugnu Mosan goes to the, the chief minister and she gets, 20 roads in her constituency and Mr. Saab gets nothing. So he'll be running around trying to get his 20 roads also. So there has to be a system of how you develop something. Today the system is a pure patronage. ये ले जी, आप पैसा ले ले. Yeah, it's all patronage. I must say the money is not given to anybody. They're not given contracts. They just identify schemes. But most of them are Well, not I mean, efficiently effectively, and the public should know this, they are getting the contracts. They are getting the contracts. 1 अरब रुपया आप एक MNA को देते हैं 1 साल का या एक MPA को देते हैं 1 साल का, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे जो काम वहाँ डेवलपमेंट के होते हैं वो खुद आइडेंटिफाई करता है. उसके बाद वो अपने ठेकेदार जो हैं जिनसे वो काम करवाता है उनके साथ बंद कमरे में बैठ के डील करता है कि इतने % कमीशन मैं लूंगा. शाहिद जस्ट अ सेकंड, ऐसे लोग हैं नहीं. ये ज्यादातर MPAs और MNAs इसी तरह हैं. आपकी तरह के या इनकी तरह के, आई वाउच फॉर माई सेल्फ, मेरी तरह के चंद लोग होंगे जो ओपन टेंडरिंग करवाते हैं कंट्रैक्टर से. बाकी सब बंद कमरे में बैठ के. और आज आप किनके टिकट होल्डर्स को देखें, दोनों पार्टीज के, बहुत ही कम उनमें से लोग होंगे जिन्होंने ये काम नहीं किया, जिन्होंने ओपन टेंडरिंग करवा के, सेविंग करवा के पब्लिक का जो पैसा है वो बार बार जाया नहीं किया. इसको आप लोग छेड़ते ही नहीं है सिस्टम. मैं फिर कहता हूँ, और वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which has a dedicated body to probe corruption by public office holders. Wow. What is that body delivered? What is that body delivered? That body itself is the most corrupt body in Pakistan today. Exactly. I mean, we are just fooling ourselves. आपने करप्शन पकड़नी है, करप्शन पकड़ना बड़ा आसान है, टैक्स लॉ से पकड़े. आप पैसा बना सकते हैं, पैसा छुपेगा नहीं. अच्छा चले, कंजम्पशन में नजर आएगा. चले, हमने करना नहीं है. ये आप री इमेजिन, एक ये हिस्सा आपका है ना कि टैक्स use tax, take everybody who has a शनाख्ती कार्ड into a potential taxpayer. तो FBR की रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे. FBR का रिफॉर्म है, FBR को निकाले इस निजाम से. अच्छा चलें, ये एक री इमेजिनेशन तो ये हो गई. दूसरी बात, the elephant in the room, like that the unaccountable institution that we talked about earlier, we dare not use the name, but however, the other elephant in the room, Shahid, manage that relationship. It has taken decades to get there. You have to get it back. It will take time. It's a process. But manage that relationship can be managed. Let me talk about the other elephant in the room. The other elephant in the room is your rampaging population and your abysmal economic growth. Seen together, Miftah, it's a horror story.